Good morning, team. KEI reported results. Results were better than expected. Revenue grew by 14% at 1,784 crores. So EBITDA margin was 10.2%, slightly lower, but no, the revenue and profit after tax was very good. Profit after tax was only 28 crores, higher by 26%. And we need to understand cable business for everyone has been doing good. In case of Polycab also, we noticed this. DBL, Dilip Bilcon and Skyway Infra project, a joint venture has declared as L1 bidder for Madhya Pradesh Jal Nigam in Bhopal for 1,947 crores. But we are not too positive on Dilip Bilcon due to corporate governance issue. We like PNC Infra, PSB project and Ahluwalia contract. And as budget is nearing, these stocks are doing better also. Concor reported results. Again, flat results. Maybe I will call it a disappointing result, with revenue slightly up by 3.4% at 2,004 crores. EBITDA margin is down 21.5%, almost 2% it is down. Profit after tax was slightly higher by 3.4% at 294 crores. It was aided by other income also. NR Agarwal also reported poor results. They have shut down one plant. Previously, we have mentioned that. So very negative on NR Agarwal. It is a paper company, waste paper cycling company. Tata Communication came with the results. Again, the result was very flat. I think the stock is highly priced and it can react negatively. Syngene revenue was higher by 22.5% at 786 crores. Profit after tax is higher by 5.5% at 110 crores. Amber Enterprises also came with the results. Profit after tax down by 56%. It is due to higher raw material cost and employee cost. Again, disappointing result from Amber. Even Syngene, the revenue has gone up, but margins are down. So some reaction can be there. We had results of even Gland Pharma. Again, Gland Pharma also disappointing results. Two pharma companies, two disappointing results. Profit after tax for Gland Pharma was down 15% and revenue was down 12%. Shoppers Shop results was better than expected. Their revenue grew by 20% at 1,430 crores. Profit after tax 68 crores versus 47 crores. This is a debt-free company with surplus cash of 42 crores. And Venu Nair, he was a specialist. He came from Trent. I think he is trying to do a good job. This is a stock to watch. Morocco plans to sell India 1.7 million tons of phosphate fertilizer in 2023 as per agreement signed with India. Morocco's OCP will supply India with 7 lakh tons of nitrogen-free fertilizer, 1 million tons of DAP. So totally the contract is valued about $10 billion. Tata Motor in an exchange notification confirms it will be delisting from the New York Stock Exchange and the termination of its ADS program from 23rd January 2023. India Infoline Securities, they came with their profit numbers. Revenue was down 6%, 347 crores. And profit after tax was down by 25% at 64.2 crores. Their AUM is 1,24,000 crores. Very good AUM. Shall be announced that they have inaugurated 14th hospital in Gwalior. Shall be orthopedic center of excellence. So positive for Shall be, but we don't track this stock much. Radico Khaitan announces successful conversion of its 140 kiloliter per day molasses plant at Rampur. Now it is, and this will be changed into a dual feed, and they also commence bottling operation
at Sitapur plant, which will help Indian-made foreign liquor and country-made liquor and UPML business in UP. The Ramapur project is 185 crores. The Sitapur project is 555 crores. All these are running on the timelines. So this is positive for Radico Khaitan. And there is a news that Radico will get benefited by 7% price increase in UP from 1st of April. Karur Vysya Bank reported results. Their net interest income was higher by 29.4% at 889 crores. Profit after tax was higher by 56% at 289 crores. Deposit was higher by 13.9% at 76,000 crores. And advances was higher by 15.9% at 61,000 crores. NIMS is higher, but all banks have seen NIMS improvement. It is due to their interest, lending interest increases, but borrowing, whatever deposit they have taken, that will take 1 or 2 quarters to reflect. So I don't think we need to attach too much of importance to NIMS. Canara Bank also, the results was very good. So I think some positive reaction in Canara Bank is possible. But let us listen to the con call and we will get back there. Zomato is saying it will shut down 10-minute food delivery service. Zomato Instant as company looks to be more profitable. If this happens, it will be positive for Zomato. Yes Bank, there are multiple news. We saw the results also. And there are one more news that 81 bonds, additional tier bonds, holder may receive shares of the bank. The Supreme Court might uphold Bombay High Court order. So almost 81 bonds are 8,415 crores, and it was this order was passed in 2020, where it will come in Supreme Court. If this happens, there will be a dilution of 3 to 4% of equity. So this is slightly negative for Yes Bank. Already the result is not up to the mark. And I don't think the way equity capital is increasing, they can make 5,500 crores profit in a year because their equity capital is so much. It becomes that much more difficult for their loan book or their advances. With that, over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं KEI के रिजल्ट्स के साथ। KEI के रिजल्ट देखिएगा तो नतीजे बेहतर थे। रेवेन्यू देखा जाए तो 14% का ग्रोथ देखा गया, 1784 करोड़ का। एबिटा मार्जिन में भी स्लाइटली लोअर था, 10.2% के आसपास का। पैट देखा जाए तो 26% ऊपर था, 28 करोड़ का। केबल बिजनेस देखा जा रही तो सारी केबल कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। पॉलीकैब के भी नतीजे अच्छे थे। दिलीप बिल्डकॉन को एक L1 बिल्डर घोषित किया है भोपाल में और 1947 करोड़ का प्रोजेक्ट करेंगे। दिलीप बिल्डकॉन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चलते हम उसे इतना रेकमेंड नहीं करते हैं। इसके अगर देखना है ये स्पेस में तो PNC इंफ्राटेक, ESP प्रोजेक्ट्स, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए। बजट के आने से आसपास ये स्टॉक्स में थोड़ी हलचल भी देखने को मिल सकती है। कॉन्कर के भी नतीजे देखिएगा। रेवेन्यू अगर देखा जाए तो ग्रोथ में 3.4% हुआ, जो कि 3422 करोड़ है। एबिटा मार्जिन देखा जाए तो 21% के आसपास है। NR अग्रवाल के भी नतीजे बहुत ही खराब थे और इन्होंने एक प्लांट भी शट डाउन कर दिया है। बेसिकली पेपर मेकिंग कंपनी है, तो ओवरऑल ये कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। टाटा कम्युनिकेशंस के भी नतीजे देखे गए, रिजल्ट्स एकदम एवरेज ही थे और स्टॉक देखा जाए तो अपने प्राइस से बहुत हाईली ओवर प्राइस्ड है। सो हमें कहीं भी अगर रैलीज मिलता है तो उसमें हमें एग्जिट करना चाहिए। नेक्स्ट ग्लैंड फार्मा के भी नतीजे देखे गए। अगर नतीजे में देखा जाए तो पैट हमें डाउन देखा गया, 15% था। रेवेन्यू डाउन देखा 12% के आसपास था। सो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो नतीजे बहुत ही खराब है ग्लैंड फार्मा के। सिंजिन के भी नतीजे देखे गए। पैट देखा जाए तो 110 करोड़ के आसपास का है। रेवेन्यू देखा जाए तो 786 करोड़ का रेवेन्यू में जब देखा पड़ा में फॉल देखेगी। तो हम देख रहे दोनों फार्मा कंपनीज के नतीजे बेहद ही अच्छे नहीं थे। शॉपर स्टॉप के भी नतीजे अच्छे दिखे गए। जो वेन्यू नायर है जो कि ट्रेंड से आए, वो कंपनी को टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। रेवेन्यू देखा जाए तो 1430 करोड़ के आसपास का था। पैट देखा जाए तो 68 करोड़ के आसपास का है, 68 करोड़ के आसपास का है। ये कंपनी एक डेट फ्री है और 47 करोड़ के इनके पास सरप्लस कैश भी पड़ा है। मोरक्को ने कहा है कि वो 1.7 टन का फॉस्फेट इंडिया को देंगी।
फर्टिलाइजर के लिए और 7 लाख टन का N3 जो नाइट्रोजन है वो भी देगी और 1 मिलियन टन का DAP वो भी देगी। तो टोटली $10 बिलियन का डील हुआ गया है सऊदी में। IIFL के भी नतीजे देखे गए, रेवेन्यू डाउन था 6% जो कि 347 करोड़ का था। पैट भी है नीचे ही देखा 25% जो कि 64 करोड़ के आसपास का है। AUM देखा जाए तो AUM इनकी अच्छी है, 1.25 लाख करोड़ के आसपास की। शालबी ने एक अपना नया हॉस्पिटल ओपन किया है ग्वालियर में, बेसिकली ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, और ये 14 हॉस्पिटल है कंट्री में। रेडिको केतान ने भी 2 नई साइट्स पे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया। पहले है रामपुर जिसमें 185 करोड़ की वो लागत लगाएंगे जिससे वो मोलासेस को कन्वर्ट करेंगे, तो बेसिकली डुअल फीड रहेगा। सेकेंड है सीतापुर में एक बॉटलिंग प्लांट है जो कि 555 करोड़ की लागत लगी जाएगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रेडिको के लिए एक और न्यूज है कि वो यूपी में प्राइस हाइक होगी जो कि 7% के आसपास रहेगी। तो ओवरऑल के सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज है। करूर वैश्य बैंक के भी रिजल्ट देखेंगे, नेम्स पे देखा जाए 29% का जम था जो कि 884 करोड़ का है। पैट में भी 56% का जम था जो कि 280 करोड़ का है। एडवांसेस भी हमें अच्छे दिखे जो कि 61,000 करोड़ के आसपास का है। बेसिकली हमें नेम्स सबके हायर दिख रहे हैं बेसिकली क्योंकि जो लैंडिंग इंटरेस्ट रेट है वो अच्छी है, हायर है। इसके चलते हमें नेम्स सब के अच्छे दिख रहे हैं, पर हमें नेम्स से फोकस थोड़ा कम करना चाहिए। कैनरा बैंक के भी कल रिजल्ट आए थे, नतीजे बेहद ही अच्छे थे। जोमेटो ने कहा है कि वो अपनी जो 10 मिनट फुल डिलीवरी सर्विस जो स्टार्ट की गई थी उसे वो बंद कर रहे हैं। तो ओवरऑल और बेसिकली इससे भी कह रहे हैं कॉस्ट की सिनर्जीज वो कम कर सकते हैं और कंपनी थोड़ी प्रॉफिटेबल भी हो सकती है। तो एक ओवरऑल के पॉजिटिव न्यूज है। येस बैंक के हम देख रहे हैं नतीजे भी खराब थे थोड़े। AT1 जो बॉन्ड होल्डर्स का जिसको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं ये सब चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर उसको भी अपहोल्ड कर दिया है और ये कहा है कि जो 81 बॉन्ड होल्डर्स को उसको इक्विटी कन्वर्ट करेंगे जो कि 3 से 4% का इक्विटी डायल्यूशन होगा। सो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इक्विटी येस बैंक की बढ़ती जा रही है और कैपिटल इनफ्लो के चलते जो 5,500 का जो लोन बुक है इन ईयर वो एक डिफिकल्ट हो सकता है येस बैंक के लिए। सो एक ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक स्टॉक रह सकता है, तो इससे हमें दूर ही रहना चाहिए। अगले रिजल्ट हम देखेंगे जिंसार के भी नतीजे देखेंगे। तो नतीजे हम देख रहे हैं तो टॉप लाइन पे हम देखेंगे तो फॉरलॉप के चलते इम्पैक्ट में था, बट मार्जिन हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर थे। रेवेन्यूज हम देख रहे हैं 146 मिलियन था जो कि 5.3% था क्वार्टर पे और हायर थे हमारे एस्टिमेट से जो कि 4.5% था। और एबिट मार्जिन था जो 7.1% था, हमारी एक्सपेक्टेशन 5.8% के आसपास थी। तो 250 बैक्स का जम देखा गया। TCV डिलीवरेंस देखा जाए तो 131.5 मिलियन के आसपास थी वो जो वर्सेस 142 मिलियन की। अगर हम इसी ज्योग्राफिकली देखेंगे तो हाईटेक डाउन था 4.9%, मैन्युफैक्चरिंग में भी 7% का डाउन देखा गया। बट बैंकिंग में थोड़ा अपसाइड देखा गया 7.4% का। इंश्योरेंस में भी 10.3% का फॉल देखा गया है। और अगर हम क्लाइंट मेट्रिक्स देख रहे हैं तो इनके पास USD 20 मिलियन और 10 मिलियन की क्लाइंट में इंक्रीज हुआ है। ये इंक्रीज हुआ 1 और 2 क्वार्टर से। और हेडकाउंट्स में भी थोड़ा सा रिडक्शन आया है 3.6% क्वार्टर और यूटिलाइजेशन जो है इसमें एक्सक्लूडिंग ट्रेनीज भी है। एक्सिस बैंक के भी नतीजे के क्रेडिट ग्रोथ डिक्लाइन हुआ 15% ईयर ऑन ईयर जो कि और 18% देखा जाए 15% था जो कि 18% से देखा जाए। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट देखी गई जो कि 2.5 से 2.4 हुई है। आउटस्टैंडिंग जो रिस्ट्रक्चर एसेट्स है वो 0.4 से 0.3% हुआ है और ये की मिनिमली है, पर उनके जो रिस्ट्रक्चरिंग पैट है 2.0 वो ग्रू हुआ 62% से जो कि ईयर ऑन ईयर जो कि लोअर प्रोविजंस के चलते हुए। नेट इंटरेस्ट इनकम भी अगर देखा जाए 32% का जम देखा गया वाई बेसिस पे। नेंस पे भी हमें जम देखा गया जो कि 3.53 से जब 4.26 हुआ है। ओवरऑल देख रहे तो ऐसे इंप्रूवमेंट दिखी गई अक्रॉस सारे पैरामीटर्स के लिए। और ROI देखा जाए तो 1.9% है जो कि हाईएस्ट है लास्ट बहुत सारे क्वार्टर्स के। करंटली हमें इसके ऊपर बाय रेटिंग है 1120 के प्राइस टारगेट के साथ और 2x के प्राइस टू एवरेज परफॉर्मेंस है। TCS ने अनाउंस किया है कि वो एक हेल्प करेंगे बिटकॉइन स्विच जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पावर करेगा TCS बैंक्स के थ्रू और प्लेटफॉर्म एनेबल करेगा बेटर क्लाइंट एक्सपीरियंस और लॉन्च करेगा नई प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल डिटेल्स अभी तक इसके डिस्क्लोज नहीं की है। ओवरऑल लेके पॉजिटिव न्यूज़ है। मारुति सुजुकी ने कहा है कि वो 11,177 यूनिट रिकॉल करेंगे अपनी जो SUV सेगमेंट ग्रैंड विटारा की। इसमें पॉसिबल डिफेक्ट है रियर सील माउंटिंग ब्रैकेट्स के लिए और ये अफेक्ट कर सकता है अगस्त और सितंबर में भी इन्होंने ऐसे रिकॉल किए थे। ओवरऑल की सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज है। वेस्टर्न ने कहा है कि वो एक अपने एसोसिएट के साथ ऑर्डर बैक किया है 1200 करोड़ का जो कि सप्लाई करेंगे स्टील पाइप्स को।
कोल इंडिया ने कहा है कि इनकी जो आम है महानदी कोल फिक्स वो एक प्रोसेस कर रहे डाइवर्सिफाई करने के पावर जनरेशन में और एक कोल बेस्ड प्लांट में सेटअप करेंगी जगह ओडिशा में जो कि 12,000 करोड़ के आसपास में है। टाटा पावर ने भी कहा कि वो एक पब्लिक ईवी चार्जिंग पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ गेल और सीएनजी स्टेशन बेंगलुरु में सेटअप करेंगे और उन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया गेल के साथ क्योंकि डीसी फास्ट चार्जिंग पॉइंट सेटअप करेंगे। दिलीप बिल्डकॉन ने कहा कि वो एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं स्काई के इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ जो कि डिक्लेयर किए गए लोएस्ट बिडर फॉर 1947 करोड़ के लिए और ये फ्लोटेड मध्य प्रदेश में है। स्टेट ओन बैंक जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा और सीजी पावर ने कहा है कि वो एमएससीआई इंडेक्स में इंक्लूड कर सकते हैं और बायोकॉन को एक्सक्लूड किया जा सकता है एमएससीआई इंडेक्स से। The derivative and technical update. Technical front, yesterday Nifty continued to trade in a range and form a doji candlestick pattern at the close. So overall index was up by 19 points. On the daily chart, past few session index is consolidating in a range. On the sectorial front, IT, pharma, auto and FMCG close in the green, while real estate and metals close in the red. Bias for the index remains positive with a range bound market. Technically above 18,200, we should be heading for 18,500 and 18,800 levels. While if 17,800 levels are broken, then follow through the selling towards 17,500 levels can be possible. On the Bank Nifty front, yesterday Bank Nifty opened gap up around 20 points and trade with a positive bias. Yesterday's session price almost closed at the value of their 50 SMA levels, 50 days simple moving average, and form a doji candlestick pattern. We believe Bank Nifty above 42,800 index should rally around 2,000 to 2,500 points on the upside. And index form are now based near 42,000 levels, so 42,000 will act as a support. Overall, huge buy on decline strategy in the market. On the derivative front, Nifty future witnessed a fresh long of around 0.12% with the addition of 17,000 shares. PCR is increased from 0.83 to 0.94 and which suggests the strength 18,200 call has seen the most OI with 34.88 million shares and 80,300 call with 17.38 million shares. On the put option front, 18,200 put with 34.39 million shares and 80,100 put with 11.52 million shares. Right now, for the Nifty rollover stood at 35% versus last expiry, if we see, so 79%. Bank Nifty witnessed an addition of long buildup of around 0.06%, and increase of 1.4k shares. PCR is slightly decreased from 0.94 to 0.95. Major OI was seen in the 42,800 put by 1.52 million shares and 43,000 put by 1.30 million shares. On the call option front, 43,000 call by 2.30 million shares and 42,900 call by 1.11 million shares. For the Bank Nifty rollover stood at 48% versus last expiry is 86%. On the FII front, FII added a long SPY 9,136 contracts. So net positive by 17,759 contracts. Overall net long short ratio is a 56%. On the cash segment, FII sold out 219.87 crore and DII bought 434 crore. So that's it from my end. Now I will hand over to Devang sir for further research update. Thank you and over to you, sir. Thank you, Kshitija. Good morning, all. So, a couple of news on the fundamental side from my end. So, Sensor reported its numbers. So, the numbers were missed on top line impacted by furloughs and margins were better than expected. In terms of Zensar, we were expecting a decline of around 4.5%. However, the decline in revenue came even lower of 5.3% QOQ. In terms of YOY also, the company only grew by 4%, while the larger peers have at least grown in the range of 10 to 14%.
The only silver lining was EBIT margin, which has expanded by around 250 BPS to 7.1%, which is on a low base. The deal win has been lower from 142 to 130.5. So the company has a client concentration in manufacturing and retail. So that has impacted their growth. The key thing to watch out is the company has come out with a new CEO, Manish Tandon. He's just 2 months back. He has come and he has been instrumental in turning around the New York-based company, CSS Corp. So what his strategy will be the key thing, and how their margin expands, at least in the near term, because the revenue will be moderate in the near term. The company will host a con call at 9 a.m. and we will come back with a detailed report on the same. In terms of Axis Bank, so Axis Bank credit growth has declined by 15% YOY versus 18% YOY, led by slower growth in retail book at 17% YOY. Asset quality improved as GNPA stood at 2.4% versus 2.5%, led by better recoveries. Outstanding COVID restructured assets stood at 0.3% versus 0.4%, lower than its peers. PAT grew by 62% YOY, led by lower provisions. Hence, overall, it seems that, the parameters have improved, and, ROA has also improved, which has resulted at 1.9%, which is highest ever in last many quarters. So we have maintained a buy with a target price of 1120, valuing it at 2x price to adjusted book value. Another news is on TCS. TCS has announced that it has helped Bitcoin Choose AG to create crypto financial technology platform by TCS Banks. So the TCS has won a platform-led deal, and it will help them launching new products sooner. Although the financial details of the deal was not disclosed, but we believe this bodes well for TCS and its earnings. In terms of Maruti Suzuki has recalled 11,000 units of its mid-size sports utility vehicle Grand Vitara to fix a possible defect in rear seat belt mounting brackets. The affected lot was manufactured between August and November. This is the second recall that the company is making within a week. We believe this is negative development for Maruti, and we have a hold rating with a stock price of 10,047. Other news include Welspun Corp, which is Saudi Arabia associate company, has signed a contract for supply of steel pipes for water transmission with a total value of 569 million Saudi riyals. So they have won a contract which bodes well for them. Dilip Buildcoin, the company is joint venture of Dilip Buildcoin Skywalk and Infrastructure, has been selected by Madhya Pradesh Jal Nigam. They have won a project cost of 1947.06 crores. So this bodes well for them. Tata Motors have confirmed that, they will delist their American depository receipts, and the effective date of the trading is January 23rd, 2023. In terms of NTPC, the company has completed the trial operation of Unit 1 of thermal power project, and it will add 660 megawatt capacity to the unit. So this bodes well for NTPC. That's it from mine. Over to you, Brijesh. Thank you, sir. A few more news updates. Regarding Coal India, the ARM Mahanandini Coalfields is in the process of diversifying into power generation and will set up a coal-based plant entailing an investment of rupees 12,000 crores in Odisha. Next is on Tata Power. They are going to install EV charging points at GAIL CNG stations in Bangalore. So they are signing an agreement with GAIL CNG Gas Limited to install the DC fast changing points at 2 of its CNG stations in Bangalore. So that will be in a watch list. Next is on Ease My Trip. They said on Monday that they are going to launch the online travel tech firm. So platform, so that will be have a customer to have an in-store kind of experience. So they are said in a regulatory filing. Next, the Bank of Baroda and CG Power is likely to get added in the MSCI Global Standard Index during the forthcoming rebalancing exercise, while Biocon is expected to get excluded from the index.